Hello viewers, welcome to this video of your online English class. Now in this video, I am going to discuss the topic paragraph writing. Now I am going to explain all the points which you should keep it in mind while writing a paragraph. आप सब लोग किसी ना किसी टॉपिक पे पैराग्राफ लिखने की कोशिश जरूर करते होंगे, आपके टीचर्स ने असाइन भी किया होगा, but at times you find it difficult how to start a paragraph, how to write it. So let us discuss in detail what points should we keep it in mind while writing a paragraph. Now let us know what is a paragraph. A paragraph is a short composition on any topic. It is a short description on any topic comprising of few simple sentences. Say 8 to 10 sentences. 8 से 10 sentences में किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कुछ लिखना रहता है in a single paragraph. This is called paragraph writing. Now first of all, let us discuss the guidelines, the things we should keep it in mind. Now before writing a paragraph, think properly and have a clear idea about the topic. टॉपिक में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसका क्लियर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए. एक्सपैंड द हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में कुछ कुछ हिंट्स दिया होगा तो उसको सेंटेंस बना के हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया होगा तो हमें अपने दिमाग से ही सोचना है that what we are going to write in a paragraph. Okay, now the introduction to the topic should be direct. Introduce the topic directly and use any proverb or use any quote to introduce the topic. अगर proverb या quote आपको मालूम नहीं है तो डायरेक्ट उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. The introduction may be the meaning of the topic or any sentence describing the topic, anything. Now use the correct tenses while writing the sentence and write the sentences in proper and natural order. अगर आप पेट डॉग के बारे में लिख रहे हैं तो my pet dog eats milk, fish, meat, etc. ये सेंटेंस सबसे पहले नहीं आना चाहिए. सबसे पहले आना चाहिए I have a pet dog और उसका नाम. So the order of the sentence should be very correct. Now write the sentences in proper and natural order and write the whole paragraph within 8 to 10 sentences. Maximum 10 sentences होना चाहिए. एक दो सेंटेंस बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, but keep it in mind your paragraph should not exceed the limit of 100 words. 100 words से ज़्यादा पैराग्राफ ना लिखें, ऐसी कोशिश करें. Okay, the paragraph should be confined to 100 words. Now let me discuss the format of a paragraph. You have to keep it in mind कि पैराग्राफ को सिंगल पैराग्राफ में ही लिखना है. You must write the topic in a single paragraph. Do not use numbering in the sentences. Sentence number 1, I have a pet dog. Sentence number 2, its name is Tommy. Sentence number 3, it is white in color. ऐसे 1 2 3 4 करके नहीं लिखना है पैराग्राफ. पैराग्राफ मीन्स एक साथ सारे पॉइंट्स को एक के बाद एक सेंटेंसेस करके लिखना है, not one below the other. Second thing, the paragraph consists of 3 main parts: introduction, the body and the conclusion. Introduction should be very short and concise. उसके टॉपिक पे एक या दो सेंटेंसेस टू द पॉइंट लिखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं. बॉडी, that is the main part of the composition, the main part of the paragraph. You have to explain or write all the detailed description about the topic. उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं एक के बाद एक नेचुरल ऑर्डर में बॉडी में लिखेंगे. एंड लास्टली कंक्लूजन. कंक्लूजन यानी समिंग अप एवरीथिंग. सारा पैराग्राफ जो लिखे हैं उसको सारे को निचोड़ करके जोड़ करके एक या दो सेंटेंस. सो योर कंक्लूजन शुड बी within 1 or 2 sentences.
Okay, now let us try to understand how to write a paragraph with a simple example. And the topic is my pet dog. Now, my pet dog. First of all, you have to write the introduction. Introduction will be very simple. इसमें कोई proverb या quote लिखने की जरूरत नहीं है. आपका introduction होगा I have a pet dog. Its name is dash. Its name is Tommy. Its name is Moti. Its name is Bruno. Its name is Buzo. Any name you can give. ये दो sentences का introduction. I have a pet dog. Its name is Tommy. Then second part is body. बॉडी में आपको पेट डॉग के बारे में सारी चीजें डिस्क्राइब करके लिखनी है. द ब्रीड ऑफ द डॉग, दैट मीन्स कौन सा ब्रीड है. इट इज अ पोमेरियन, इट इज एन एल्सेशियन, इट इज ए डेशियन, इट इज अ जर्मन शेपर्ड, इट इज ए लैब्राडोर. कई तरीके के डॉग्स आते हैं. सो यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट इज योर डॉग. ओके, व्हिच ब्रीड. Then you have to write about the body features. Body features, you may write about the color of the body. It has a strong and stout body. It is white in color. It has a lot of hair on its body. It has a bushy tail. It has a long tail. ऐसा करके. It is very tall and strong. Then you write about food habits and other habits. Food habits. What do you give about the food and other things? What do you give about the food and other things? And then you have to write how you take care of your dog, and you have to write about any other things. तो food habit में आप लिख सकते हैं I feed my dog with rice, milk and your meat, eggs, etc. How to take care, taking care के बारे में लिख सकते हैं I bathe my dog every day, I take him for a walk, I play with him, I take every care of him. ऐसे करके. And lastly, conclusion. Conclusion में क्या लिखना है? How much you like it, or what kind of pet dog it is, or how much you care for it. तो conclusion एक दो लाइन का हो सकता है that I love my pet dog very much, या फिर my pet dog is a faithful pet. ऐसे करके. So in this manner you have to arrange all the points. Now let us look at a sample of the pet dog. So here is the sample, my pet dog. How you have to write it? Now introduction से शुरू करते हैं. I have a pet dog. Its name is Tommy. ये introduction part हो गया. Then body part. It is a Pomerian. Pomerian is the breed. It is a Pomerian. It is white in color. It has a short hairy body with a bushy tail. ये इतने हो गए इसके बॉडी फीचर्स. दीज आर द बॉडी फीचर्स. नाउ फूड हैबिट्स. आई फीड हिम विथ राइस, मिल्क, एग्स, मीट, एटसेट्रा. नाउ हाउ डू यू टेक केयर ऑफ हिम? आई बेथ हिम एवरी डे, आई प्ले विथ हिम. नाउ व्हाट आर द हैबिट्स? टॉमी गार्ड्स आवर हाउस, इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. और लास्ट में उसका कंक्लूजन, इट लव्स मी वेरी मच, इट इज ए फेथफुल पेट. नाउ लेट्स हैव ए क्विक लुक. पूरा मिला के कैसा होगा? आई हैव ए पेट डॉग, इट्स नेम इज टॉमी, इट इज ए पोमेरियन, इट इज व्हाइट इन कलर, it has a short hairy body with a bushy tail. I feed him with rice, milk, eggs, meat, etc. I bathe him every day, I play with him. Tommy guards our house. Tommy barks at strangers. It loves me very much. It is a faithful pet. Now dog के लिए आप him भी लिख सकते हो, because dog can be male and female. She भी लिख सकते हैं. और bath नहीं लिखना है. B-A-T-H-E, bathe. Bathe means nahana. It is a verb. So in this manner you have to write. And you can see now on the screen. ऐसे 1, 2, 3, 4 करके बिल्कुल नहीं लिखना. This is a wrong practice. Number 1, I have a pet dog. Number 2, its name is Tommy. Number 3, it is a Pomerian. No, you don't write in this manner. You write in a single paragraph. ऐसा, as shown in your screen, in a single paragraph. Okay? So I hope you all understood the video. Please like it.
Please share it and please complete the homework to write a paragraph on my pet dog. Thank you.